हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। We pay our respects and obeisances to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, जिनकी वजह से we have all these temples, we have these festivals, we have exalted devotees such as Mataji and Prabhuji who transport us to another world altogether, and we have access to people like that. Otherwise, how would you know that people from all over the world coming together and singing Hare Krishna? How will that be possible? That's only possible because of Srila Prabhupada. So we pay our respects to him by saying his pranam mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So, in the Bhagavad Gita, what are we doing? We basically have covered, Mahabharat ka युद्ध होने वाला है. Arjun has a lot of doubts. Then Krishna, he comes to Krishna, asks his doubts. As part of his answers, he explains Karma Yoga, Jnana Yoga, and then now he's on what yoga? What yoga? What yoga? Dhyan Yoga or Ashtanga Yoga, chapter 6. And in the last two sessions हमने how do you remember the chapter 6? कैसे acronym क्या है? EASY. E stands for enemy or friend. A stands for S stands for success or failure. Y stands for yogi. Who is the real yogi? So this is what we were talking about. This is the section that we have touched upon, enemy or friend. Who are we talking about? Enemy or friend? किसकी बात हो रही है? माइंड. यस, माइंड की बात हो रही है. हर बार यहीं पे आके हमारी बात रुकती है. Whenever we talk about spirituality, तो हम माइंड की बात करे बिना रुक ही नहीं सकते. We have to speak about the mind. Why? Because mind is the interface between our real self, which is who? Soul, and the outer world through the senses. ये इंटरफेस है हमारा. यस और नो? थैंक यू. ये हमारा इंटरफेस है, हमारा सॉफ्टवेयर है. यस और नो? दिस इज अस इन रियलिटी. व्हाट इज, हु आर वी? सोल. हम रियलिटी में सोल है, बट हम व्हाट आर वी आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स एज? सेंसेस ऑफ द बॉडी. यस और नो? तो इसके बीच का जो ये करेक्शन होना है, या तो हम यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं, लेकिन कहाँ से ये सब कहाँ से हो रहा है? सब कुछ माइंड से हो रहा है. सो दिस इज द पिवटल पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. हेंस एवरी सिंगल पाथ विल टॉक अबाउट कंट्रोलिंग द सेंसेस, कंट्रोलिंग द माइंड. ऑल पाथ्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल टॉक अबाउट दिस. Krishna has also spoken about this in lots of different things, ways. हम लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे. हम बेसिकली बात करेंगे कि what are the kinds of people there are there in this world, right? बहुत सारे अलग अलग रोग भी हैं, but लोग भी हैं. There are many different kinds of people in this world, and everybody looks at each other very differently. Yeah, the first kind of people are जिनको कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है, अपने दुनिया में मस्त. Can you all see the board? Yeah.
कि अपनी दुनिया में मस्त, they have no they don't have any, I don't want to do any work, nor do I want to care about anybody else. I just want to be by myself doing my own thing. I don't want to get up and do things. Yes, is that okay? I put the word lazy, but don't take it as a derogatory thing. I like lazing around. It's a positive thing also. Okay? So कोई offense मत लेना personally. मुझे मेरा नाम कैसे ले लिया इसने? It's me. I'm talking about me. Don't worry about this. Then there is people who are busybodies. Who are busybodies? ये लोग कैसे होते हैं? What do they do? Do you know any busybodies? Do you consider yourself a busybody? Yeah? No? Yes, sometimes. Yeah? Busybodies मतलब क्या होते हैं? Always busy. Doing something. Have a lot of things to do. Don't disturb me. I have the world to move. I have to move the mountains in this world. Yeah? मेरी वजह से तो चल रही दुनिया. चलानी है हमें. तो busybodies, all of us, many of us are busybodies, and we don't have time for anything else because there's so much to do. There is so many duties, responsibilities. They're busybodies. Then there are types of people जो थोड़े अब वैसे टाइप के होते हैं, पढ़ाकू टाइप के, who are all about the it's spelled with a J, but you can call it ज्ञान. ज्ञानी लोग होते हैं. They're little slow down. They slow down a little bit in their lives and they start contemplating. ये थोड़े contemplative लोग होते हैं, philosopher type लोग होते हैं, मुनि type लोग होते हैं, right? जो बैठ के सोचते हैं कि भैया है क्यों है, क्या है. Researchers are not busybodies per se. आजकल सब कुछ mix हो गया है, but usually they have to sit and think about things. For that you need a थोड़ा सा calm mind, थोड़ा सा सहनशीलता चाहिए होती. Yes or no? You understand all this? Yeah? Hare Krishna. First is, second is, third is Jnani. Knowledgeable person. I want to read about every single thing that is in this world. You know, मैं Google करके रहूँगा कि ये क्या देख लिया मैंने आज. Whatever I see, I will Google about it. Whatever I see, I will read about it. Is that okay to understand? I want to know everything about everything. समझ आ रही है हमें बात? ओके. और कुछ लोग होते हैं जो और भी थोड़े आगे होते हैं, तो ध्यान टाइप लोग होते हैं, योगी टाइप. कैसे टाइप? They're a little bit more about the subtler energies in life, the subtler things in life. I want to sit and meditate. I want to sit and mind you, यहाँ से यहाँ तक हम पूरे दिन में, एक दिन में यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं. In one single day we can go through all of this. Yes or no? So meditation वाला एक mode होता है when we want to meditate about the mystic things in life, about the थोड़े जो mysterious चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये करूँगा तो subtler चीज़ें, about subtler things in life we'll get to know. We'll go to the Himalayas and then we'll meditate there, etc. We understand all this? तो lazy type होते हैं, busy type, ज्ञानी type and then yogi type. इन सारे चीज़ों में can you see what difference? Do you see externalities में इन सब में differences हैं क्या? Externalities में अगर कोई बोले lazy person, busybody person, पढ़ाकू person and meditator person, आपके दिमाग में अलग अलग personas आ रहे हैं क्या? अलग अलग आपको छवियां आ रही है दिमाग में, avatars in your head. Can you see them? When you see lazy person, what can you think of? First thing that comes to you, what's image that comes to your mind? क्या आता है? In the bed. My wife has a T-shirt. It says Namaste in bed. Stay, like not Namaste. It says Namaste in bed. Pretty cool. There's another. जब busy आता है, तो हम कैसी image आती है? Running around and doing what? Work, lots of work on the call, on phones, on Teams, and on emails, and on घर में भागा दौड़ी, and multitasking and telling people what to do, organizing stuff. Can you imagine that? Okay. And पढ़ाकू type जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने की इच्छा हो, what comes to your head? मैं expect कर रहा था एक आंसर. My sister. नहीं, ये नहीं.
मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर चश्मे, सबने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे चश्मों वाले पॉपुलेशन ज्यादा लग रही, पिटना था। बॉल्ड ऑल्सो, ब्रोजी से बॉल्ड, हाँ प्रोफेसर टाइप थोड़े, है ना, तो वैसा टाइप छवि आती है। एंड मेडिटेटर कैसे छवि आती है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? आईज क्लोज्ड एंड लॉन्ग बियर्ड, नहीं बोला। What do you think is very mysterious, mystic type, like very deep kind of person? ऐसी सारी छवियां आ रही हैं दिमाग में, या एक्चुअली जिंदगी में ना आप, हमारा माइंड क्या करता है, पूरे टाइम छवियां ही देखता रहता है। किसी चीज को देख, किसी पर्सन को देखता है ना, वो प्रोफाइल बना देता है उसकी, ये ऐसा होगा, ये पर्सन ऐसा होगा, ये पर्सन ऐसा होगा। और किसी चीज, लाइक इफ समवन एक्सपेक्टिंग टू मीट समवन, अगर वो इमेज ना मैच कर रही हो ना, बोलेगा नहीं ये पर्सन ठीक नहीं लग रहा फॉर दिस जॉब, बिकॉज इमेज मैच नहीं कर रही है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अ प्रोफेसर हैज टू लुक लाइक अ प्रोफेसर टू कमांड दैट respecting in professing, if that's a word, but you understand what I am saying? At least initially, मैं initially की बात कर रहा हूँ। हम सब छवि से चलते हैं। We all look at the externalities. The world is whole totally working on the externality. Yes or no? What we can see, what we can hear, and what we can really perceive right in front of us, प्रत्यक्ष, उसकी हमें छवि पता है। तो ये सारी जब छवि अलग है ना, तो ये एक दूसरे को ना, sometimes they are at loggerheads. They think of each other, नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। जो ज्ञानी होता है वो योगी को देख के क्या बोलता है, मैं ज्ञानी हूँ, ये you know these guys keep meditating, looking for something, you know, which they've never seen, they're looking for something deep. No, let me get to know about the world. I'm not this person. And this busybody, what does this person think about everybody else? अरे काम कर भाई, do some work man, what are you doing? Let me do my work and you also do something. Come, let's do something. Get up and do something. So this person thinks everybody else is Vela person. Only people who are like me, who are doing something, are the real people in this world. They're actually doing something useful. And what does this person think? It's like, what are you doing, man? इसके बारे में सोचता बोलता है कि बेवकूफ आदमी है, भागता रहता, पूरे जिंदगी का एंजॉयमेंट ही नहीं लिया इसने। या या हाँ, रिमोट कंट्रोल, गिव मी द रिमोट कंट्रोल ऑल्सो। हाँ, यस यस, हम सबको अपनी याद आपने दिलाई है किसी ना किसी दिन। सो लेजी पर्सन थिंक्स अ बिजी पर्सन इज मैड, ज्ञानी पर्सन है कि ये तो बस बुक वर्म, नर्ड समझता है इसने आपको, एंड इसको देख के तो समझता है ये तो मतलब आउट ऑफ द हाई पर्सन है, ये थोड़ा इम्पॉसिबल आदमी है, ये आउट ऑफ सिलेबस है दिस पर्सन। इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड? मैं ये बात करने की, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज दैट These, because external हमारी images इतनी बनी हुई है, categorized हुई है, that they are at loggerheads with each other. They don't seem to really fit together, right? So in spirituality also all of this is working. Some of them are not interested. Some of them are saying that कर्म ही क्या है, पूजा है. Some of them are saying what? Like I get to know, read more books, read all the Vedas, read all the scriptures. That's actually gonna really pursue you into get. And some are saying what? Leave everything, go to the hills and meditate. And all of them, even in spirituality, they are thinking. मैंने पहले तो first we spoke about कि दुनिया में, फिर एक commonality लिया है कि spirituality के regard में. इन स्पिरिचुअलिटी के रिगार्ड में ना ये सब एक दूसरे को कैसे देखते हैं, एक दूसरे को अलग देखते हैं. दे सी ईच अदर एज सेपरेट, दे डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर. डू यू अग्री हियर? डू यू अग्री हियर? यस और नो? ठीक है, सम ऑफ यू आर सेइंग यस, others are thinking about it. But there is something else. What other kind of spiritual person is there? There's some other kind of spiritual person.
मैं वहाँ खड़ा था अभी कीर्तन में, तो मुझे उस टाइप का एक पर्सन दिखा जो नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे, बहुत मतलब उन्माद में थे. You understand what I'm saying? So I'm just going to write as bhakt or bhakti. I'm just going to write it as bhakti. Is that okay to understand? Bhakti का क्या मतलब है? Devotion. People usually call this person as religious, who are just dancing and singing and reveling in a kind of कीर्तन में बैठ के ताली बजा रहे हैं. तो ये इमेज जो छवि है, मंजीरा बजा रहे हैं, तो ऐसी छवि यूजुअली कैसे, what would you put it as? You put them in a very big bracket of being zealots, or you could call them. You understand what I'm saying? Yeah? So this doesn't make any sense. We have put them in a category, and यहाँ पे भी ये पूरे cycle में when we are here, no, when we are being busybodies, when we आज यहाँ पे बैठ के हम कर रहे थे जो भी कर रहे थे, लेकिन when we are in the mode of being busybodies and we see someone else being doing this, बजाऊं ताली in a kirtan, we don't really put ourselves in the same bracket, do we? What do? We say they are very separate and I am very, yes or no? Yep. Agree here? हाथ उठा के बोलो, agree here or not? You agree? And when we being lazy, jnani, yogi, so we're not being able to see eye to eye with each other when all of these things are happening. Yes or no? Now coming back to the mind, let's see what's happening. In bhakti, actually all of this gets reconciled. ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? एक समा हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? कैसे हो जाती हैं? How does this happen? Actually, bhakti is a science. But because we have just seen the outer coverings of all of this, we don't know what actually it means to be busy. We don't know. When we are this person, we don't like this person. When we are this person, we don't like this person. Because हम सिर्फ externalities में देख रहे हैं. But when we actually go into the science of bhakti, जो हम ध्यान योग के इस चैप्टर में आके पढ़ेंगे, we'll get to know something that all of this is getting reconciled. The science of bhakti is not just about, when I used to see, before coming into bhakti, when I used to see someone dancing and crying and, laughing and singing as a religious person, I never used to identify with them. मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि नहीं, I relate with them. मैं कभी relate नहीं कर पाता था. मैं सोचता था ये बूढ़े लोग कुछ कर रहे हैं अपना, हम अपना कुछ करते हैं. You understand what I'm saying? या तो मैं नहीं यार, मैं I'm very sophisticated. I am going to read about it. I'm going to hear. I'm going to थोड़े intellectual people से मैं सुनूंगा कि ये spirituality की क्या बातें होती हैं. या तो मैं सोचता नहीं यार, it's all about doing good things for others, being busy for others, or none of this is actually working. Leave all of this, just enjoy life. Or you actually go into the mode of meditation. You don't really relate here. Do you understand what I'm saying? Do you get what my point is? Hare Krishna. Now let's just understand what this is and how it reconciles everything. In bhakti, what do we do here every week? What do we do here every week? We talk about what are we studying? What are we studying? It's actually a class. That's why there's a board. You understand what I'm saying? So if you're studying, does this come under that? Gyan comes under it? Okay. If every morning we are doing what? Chanting. Even before class, when we are doing kirtan, we are doing what? We are chanting. We are trying to concentrate on a mantra. Meditate on a mantra. Mantra meditation. So does this come into that? It comes into that? Good. When we have to organize classes at our house, when we have to organize festivals at different places, etc., 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 are we busy? Leave all that.
You know, nobody is more busy than a bhakta. They have so many, they're always plotting. You will never know it. I know the inside thing. They're always plotting with each other. कि how to take over this whole world. वर्ल्ड डोमिनेशन की बात करते पूरा डिक्टेटर टाइप, पूरा वर्ल्ड डोमिनेट कैसे करना है, सबको भक्त कैसे बनाना है. They actually the most busy because they have the biggest task. And how do we actually share Krishna consciousness with everybody else? If you ever see a life of a devotee, they're very very busy. They're not. बस ये बेचारा एक रह जाता है. This is the one thing that you can't do, which is be lazy. But everything else gets covered. So we were talking a lot about how all of this, last 5 minutes. So all of this is basically we see differences. But अगर हम internals में जाएं तो हमें समझ में आता है कि ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इसमें include हो जाती हैं. And this dancing and singing and crying, it has a science behind it. If you don't understand the science, if you don't understand the scripture, but आप सिर्फ dancing, singing enjoy करते हो, then that means it's a good thing, but it's more on the level of emotion, sentiment. Religion without philosophy is sentimental, and religion without emotion is what? It's dry speculation. सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अगर हम बांटे, तो अगर इमोशन की बात ना करें, इमोशन को बाहर रख दें, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास वी हैव बोथ एलिमेंट्स ऑफ इमोशन एज वेल एज लॉजिक. डू वी एग्री हियर? So both have to be incorporated for us to be fully engaged in this science of bhakti, science of self-realization or science of spirituality. And bhakti does that beautifully. It engages us in action, it engages us in knowledge, it engages us on a subtler energy level. Do we understand this? And it does all of this incorporating emotion. Incorporating what? Did you feel some emotion in this kirtan? You felt something? ये सब हम देखने की बात कर रहे थे. ये सब हम देख के अलग करते हैं, बिकॉज हमारा प्राइमरी जो परसेप्शन है वो देख के मिलता है. तो here all of us are here for spirituality. So I want to ask all of you that can we see God? Can we see God? Yes or no? Yes. Confident answer. Yes, how? How can we see God? Close your eyes. Oh, I see अंधकार. मेरे तो लाइटें गुल हो जाती हैं. I can't see God. Maybe some can. I can't see. How can we see God? How do you know God's there? Really? Maybe once or twice अगर आप आंख बंद करें आपको दिख जाए. But full day, do you see God? हम तो कहते हैं भगवान हर जगह है, तो दिखने चाहिए ना हर जगह. तो नहीं दिखते हैं क्या हर जगह? Full time? How do you see God? Yes, ma'am. Maybe we cannot see his face, but we can see his hand. We can see his hand. Oh, what is this? No face, hand, very scary. But hand in not many things. Yeah, his presence, you mean. Hand of God. Nice. That's a good reference, football reference. So, the presence of the Lord, she's saying that we can see. But can you still see? Or can you feel? Can you feel? Can you feel? बताया तो है, लेकिन आप फील कर रहे हैं पूरे टाइम, 100% टाइम, कि मेरे साथ पूरे टाइम कोई बैठा है मेरे अंदर. फील कर रहे हो आप 100% ऑफ द टाइम? नहीं फील कर रहे हो. ये फील करना है हमें, और थोड़ा थोड़ा फ्लिकरिंग इधर उधर हमें फीलिंग मिलती है when we start following the process of bhakti. Hence Mataji is saying that when we close our eyes we can see Krishna, because अभी तो कीर्तन सुना है तो अभी दिखेंगे, लेकिन बाहर जाते ही शायद दिखे, शायद हमेशा नहीं, शायद दिखें. Yes Prabhu, you had a question? Okay. But हमेशा दिखने के लिए हम उस रास्ते पे जा सकते हैं. कैसे? by associating with things which are potent with this spiritual energy, with this spiritual power. ये ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें spiritual power है? कौन सी ऐसी चीजें हैं?
devotees, who else? Mandir, the temples, what else? Sorry? हरिनाम में है, the holy names, what else? प्रसादम में है, favorite, what else? बुक्स में है, स्क्रिप्चर्स में है, वाणी में है, धाम में है, धाम जाते हैं ना हम एक्चुअली. मंदिर, हाँ मंदिर एक्चुअली व्हेन आई से मंदिर, मैं डेटीज की बात, मंदिर एज इन नॉट द प्लेस बट डेटीज को जब हम देखते हैं तब भी हम कनेक्शन में आ सकते हैं. बट धाम में अगर डेटीज भी ना हो, जिसे हम धाम चले जाएं, तब भी हम भगवान को फील कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज धाम हैज दैट पोटेंसी. एंड टुडे वी हैव दिस. तो भगवान को फील करेंगे ना तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे. ये जो सारा प्रोसेस है ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर द लॉर्ड, ऑफ गेटिंग टू नो थिंग्स अबाउट द लॉर्ड, अबाउट मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, ऑल ऑफ दिस विद द इमोशन ऑफ दैट आई एम डूइंग इट फॉर द लॉर्ड. ये हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू इट? This is how the mind is getting engaged. Mind gets engaged with some kind of activity. Mind gets engaged with some kind of knowledge. Mind gets engaged when we meditate a little bit about. ये successively difficult है. जब आप कुछ कर रहे होते हो तो माइंड ज़्यादा लग रहा था, कुछ पढ़ रहे होते हो तो शायद थोड़ा थोड़ा दम लगाना पड़ता है. Yes or no? मेडिटेट कर रहे होते हो तो ज़्यादा दम लगाना पड़ता है. Yes or no? भक्ति क्या करता है? माइंड को इन ऑल दीज एक्टिविटीज से हमारा माइंड लगाने में, रिझाने में भगवान में हेल्प करता है. एंड फॉर दैट ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स आर देयर. धाम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एंड टुडे वी आर लकी बिकॉज टुडे वृंदावन धाम इटसेल्फ हैज कम टू गुड़गांव इन द फॉर्म ऑफ अकिंचन कृष्ण प्रभु जी, बिकॉज ही हैज स्टेड इन वृंदावन धाम फॉर सो मेनी years. When someone stays somewhere for a long time with a lot of attachment, no, आप उनसे बात करते हो तो फीलिंग आती है ना कि वो जगह कैसी होगी, वैसे वहाँ के लोग कैसे होंगे. Do you get that feeling more and more? Yes or no? वो फीलिंग वहाँ की लेके चलते हैं. It's almost like किसी रूम में आपने बहुत सारी अगरबत्ती चला के रूम बंद कर दिया हो और उसमें एक बंदा छोड़ दिया हो, और उसके बाद रूम खोल के वो बंदा बाहर आए, तो जो अगरबत्ती की खुशबू है क्या वो बंदा लेके नहीं घूमेगा? Just like that, the potency of the dham is so much that that person becomes engulfed in that consciousness, and that person carries it around. And that is what Akinchan Krishna Prabhuji is doing for us, Rati Manjari Mataji is doing for us, and that is the reason why we all flock to him, because he is that kind of devotee who has that consciousness already, which is busy in the service of the Lord, who has studied about the Lord, who has meditated on the Lord every single day, and has done all of this with a lot of. Have you seen him? मैंने एक भी फोटो नहीं देखी जहाँ कृष्ण प्रभु जी गा रहे हो और स्माइल ना कर रहे हो. He's always smiling. हमने कितना स्माइल कैसे कर सकता है कोई? कुछ तो दुख होगा. मेरे पास सारे हैं क्या? इनके पास नहीं है क्या? बट उनके पास भी होंगे. But because he is in touch with the Lord, especially when singing the kirtan, he's so happy. And that happiness we can steal a little bit. Not from him, but from the eternal consciousness of the holy name. He is just a medium through which we can actually get it. Otherwise, we can do kirtan, we can do harinam, but we are very distracted, we are very distressed. This is like going to dham. By hearing a person from the dham who is a devotee and he is so attached to the holy name. Who wants to hear him now? Hare Krishna. So let's call him. आप जोर से हरे कृष्णा बोलोगे तब आएंगे ना. जोर से बोलो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा. हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम. Hare Hare. So once he comes out, how many of us will actually engage in singing with him? Who here will sing with him? This is when, हम जिंदगी में we have so many opportunities in life when कोई आगे से बोल रहा होता है और हम चुप रह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम चुप नहीं रहते, हम क्या कर जाते हैं? बोल जाते हैं. और फिर बोलने से क्या हो जाता है?
गुड़ गोबर। और अब मौका है बोलने का, गाने का, तो हम क्या कर रहे होते हैं? चुप बैठे होते हैं। अभी तो मौका है बोलने का, तो अभी मौका लेंगे। तो इस बोलने से, इस मौके को लेने से हम एक्चुअली, हमारा गुड़ गोबर नहीं होगा, सिर्फ गुड़ ही गुड़ होगा, ऑल गुड। Yeah, so that's why people say Hari Bol. What do we say? Say the names of Hari, and that's what Prabhuji is here for, facilitating so kindly for us all the way from Vrindavan. Hare Krishna. Prabhuji, we welcome you again, request you again. We can see that you're tired, but we'll really trouble you. Prabhuji and Mataji both, if you can come and yeah. Jai. There, I just heard from Mataji today that Mataji is from Russia. She's from Russia. But she was saying something like she was telling everybody. Yeah. Like as a child, like she used to read each and every book. She wanted to find the absolute truth. So she was like doing. Like all of us do. No, we don't. She was a vegetarian already. Yeah. She was a vegetarian already in Russia only, and then she read all the books, and finally she got in touch with devotees, and she did. I think other parts also she tried. She could tell To something. some extent, but Yeah. then finally she got into Krishna consciousness. Jai. Lucky for us. She could share a bit, maybe she could tell something. Yeah. She would come there. Mataji is here. She's